हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल ट्रेड विद गोपी। आज हम डिस्कस करेंगे एल्गो ट्रेडिंग के बारे में दैट वी आर वर्किंग ऑन। हम लोग एल्गो ट्रेडिंग के ऊपर ऑटोमेशन के ऊपर काम कर रहे हैं पिछले 1.5 years से। एंड वी डेवलप्ड वन एल्गो विच विल टेक केयर ऑफ from 0 to 100 whatever is needed in option trading buying side. It looks after each and everything, and everything is done by automation. So what are the core concepts that we have included in it? I'll explain that to you guys and show you one trade which our algo has traded taken, and what are the things it does before taking the trade, what it does, and once the trade is taken, what are the things happens in the trade. I'll try to explain that in this video, so please watch it. It might be a big one, but if you guys want to seriously think about automation, please understand what are the things that goes in for coding purpose. मोस्ट ऑफ द थिंग बहुत सारे लोग सोचते होंगे कोडिंग इज़ वेरी इजी, क्या है उसमें, वी कैन कोड दिस। मेरा ये वीडियो देने के बाद सब लोग को फर्स्ट थॉट वही आएगा जो भी सॉफ्टवेयर में है, और एल्स हु डजंट नो द सॉफ्टवेयर आल्सो कोडिंग पार्ट, दे विल थिंक द फर्स्ट पार्ट इसमें क्या है, इट्स वेरी इजी, दिस कैन बी डन। इफ दैट वाज द केस, अभी जो जो आईआईटीज में पास आउट है, जो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है, who have done very well in their lives in coding part, and who have come out of very good reputed institutions, IIT or other institutions, would have cracked it, but that is not the case. See, एक बंदे को देखिए, इंजीनियर को he knows what to be included. अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को he might be knowing coding related to Java, Python or whatever, but he can't do everything. He will just code whatever the requirements are, but in trading it's a separate thing. No one can do coding without having knowledge of trading. Code करना easy है, but he should know what are the things that needs to be considered to code it. मैं और मेरे एक फ्रेंड है जिन्होंने ये कोड किया, उसको भी it took almost 1 year, and he was into trading. He is a software employee, he is working somewhere else, and he was doing trading for the last 2 years. Still it took 1 year for us to develop this. So understand how tricky it is. Most people may say अरे उसमें क्या है, हाँ, so RSA वैल्यूज ले सकते हैं वो ये। अभी एक स्ट्रैटेजी में बोलता हूँ, अब देखिए RSA का स्ट्रैटेजी रहेगा, आप बाइंग में क्या है, इफ़ यू वांट टू बाई कॉल, सो RSA 55 के ऊपर रहेगा तो टेक कॉल, और 70 के पास बुक प्रॉफिट। इट लुक्स वेरी सिंपल, राइट? एंड फॉर PE trades, if RSA is below 40, take trade and close at 30 or 25. It, when we explain it in words, it's very easy. But to code it, you have to explain each and every candle and what needs to be stored, what needs to be downloaded, what are the things it has to check. So these are all the things that comes into coding, which a ordinary or else a person who doesn't know trading will find it very difficult. तो आप लोग ये सोचिए ना, if it was so easy, algo was so easy, all software guys would have made a algo and run it and earned a lot, but that is not the case. We have seen a lot of software professional, big all educated person losing their money in trading.
ओके, सॉरी हम लोग डिवेट हो गए। ओके, सो आई विल एक्सप्लेन व्हाट आवर एल्गो डज। Our algo is based on EMS. You guys know that I trade using EMS, right? So it's 7 and 21. So first what it does is when you run the code, what it does is first it will evaluate the trend. It will evaluate trend at the start and see which side, whether it's upside, sideways or downward. If you look over here, it says sideways, right? Sideways रहेगा तो it will say just waiting for valid signal. That's how it goes. ठीक है, जब तक आपको ट्रेंड, एनी ट्रेंड, इट वाइट से, अभी देखिए ये साइडवेज है पूरा, so there is no trade, obviously will not trade over here, or else it will not execute any trades, right? Next comes if it is uptrend, यहाँ पे साइडवेज दिख रहा ना ट्रेंड, अप ट्रेंड आ गया, then it will go and check, so ट्रेंड अपसाइड है, so it will go and check CE साइड का ट्रेड लेने के लिए, it gets ready। वहाँ पे भी once it goes into the once it opens the chart, so what it does is once up trade आ गया, so it will go to CE chart whichever is ATM। so अभी देखिए 26,222 चल रहा मार्केट, राइट? so देखिए हाई लो क्लोज, यहाँ देखिए, हाँ क्लोज इज 26,254, राइट? so what it will does is इससे एक 100 नीचे का कॉल दिखेगा, दैट इज 26,150 का कॉल, और एल्स 100 का कॉल दिखेगा, it will round off again, and that too is done by algo itself, which is strike price selection also it is done through automation. So over there we have given things like, now it's, let's check, it's 26,254, which is not a round figure, our nifty is in divisibles of 50, so we have given that also, so it will take 26,150 ka, right, call देखेगा if it is upside, in that also it will check whether the crossover has happened, that is 720 का crossover हो गया और 7 EMA के ऊपर कैंडल क्लोज हुआ या नहीं, वो देखेगा। वो देखने के बाद if there is a crossover and the candle has closed above 7 EMA, then it will place your order at the closing of that candle। वो ऑर्डर वहां पे रख के छोड़ देगा, इट्स नॉट लाइक इट विल टेक डायरेक्ट मार्केट ऑर्डर, नो, वो क्लोजिंग पे ऑर्डर लगाएगा और एसएल जो भी हमने पैरामीटर्स दिया है, हमने दिया है 4% का एसएल, 4% का टारगेट, फर्स्ट टारगेट इज 4% एंड एसएल इज 4%। सो इफ यू हैव टेकन ए ट्रेड, इफ द ट्रेड इज सपोज टू बी एग्जीक्यूटेड एट 100 रुपीज, सिंपल 100 रुपीज पे एग्जीक्यूट होना है तो 96 का एसएल लगेगा, 104 का फर्स्ट टारगेट लगाएगा। Okay, if market goes as per our trend, then 104 तक जाने के बाद, 104 जाने के बाद next target is 108, then our SL will move automatically to cost price। जब फर्स्ट टारगेट हिट होंगे ना तो कॉस्ट प्राइस को चले जाएगा, उसके बाद 8 का टारगेट देखेगा, 8 टारगेट जाते ही हम ना हमारा SL ना इट विल मूव टू 4% and thereon। That's how we have created this algo, and we have been testing it, live testing it for the last 5 months, and it is giving us good results, and we have never went below our capital से नीचे कभी नहीं गए अभी तक, that is one main thing। okay, so इसमें क्या है बोले तो ह्यूमन इमोशंस, लॉसेस ज़्यादा लेना, that is all taken care, because we have put that also। if we hit 2 SL in a day, that is 8%,
8% का लॉस हो गया, then system will shut down completely, and you can trade, and it will be giving, it will be checking other things like ये signals वो सब देखते रहेगा, but trades will not be generated. That's how we have done it. So capital is always saved. So if you make a loss someday, you can make it up the other day. So इन 5 महीनों में हम लोगों ने कभी भी कैपिटल के नीचे नहीं गए। एक दिन, शायद एक दिन गए थे, उसके बाद इट कवर। मंथली वाइज देखेंगे तो वी नेवर वेंट बिलो आवर कैपिटल, राइट। ये सब हम लोग ये कर रहे थे, इसीलिए दैट्स द रीजन आई डोंट डू मैनुअल ट्रेड्स नाउअडेज। फॉर ट्रेडिंग पर्पस, फॉर आवर what do you say, course purpose, I am doing small trades. Those are what I include in our uh, videos. So this is one main reason that why I don't do live trading or manual trading. Okay, let's get on and let's see how that works. So this is the first part. First it checks whether market, what the market trend is, and trend के बाद it gives this way, if the trend is upside. अब यहाँ देखिए, market upside का trend was upside and we have met all the parameters, और 25,900 का कॉल आया हमें। ओके, so 25,900 में कॉल में, if you guys look, we have deployed around 1 lakh capital in this 1 lakh capital से one more thing, whatever capital you guys have, we can allocate lot size also with whatever capital is included in it. Like अभी 50,000 है, so it will check with the cost price and divide with your capital, and whatever lot size is nearest, it will take those many lots. That's how we have created. And one more thing, we can do any adjustment whatever we need. Strategy wise it's simple, but profit and stop loss is can be changed according to our requirements. So in this trade, if you look, the market is uptrend, so we have taken a call, 25,900 call. Okay, just a second. अब ये देखिए, it has taken trade at 180.50. okay, so 181.50, और हम लोगों का SL रहेगा 4%, so it will be at 0.96, right? so देखिए 174.24 का SL रहेगा. Let's check whether that is applied or not. देखिए SL is 174 3 point as we calculated, right? थोड़ा पॉइंट उधर इधर है क्योंकि डेसिमल्स में ट्रेड लिया था, ठीक है। अभी देखिए ये है, अभी टारगेट कौन सा रहेगा, सिंपल 181.5 इंटू 181.5 इंटू 1.04, 4% करेक्ट, 181.5 इंटू 1.04. तो देखिए टारगेट क्या है 188 पॉइंट्स, फर्स्ट टारगेट इज 188.76. सो लेट्स सी वहाँ तक जाएंगे नहीं जाएंगे देखेंगे एक बार. सो वहाँ पे 188.16 के पास जाने के बाद 76, देखिए SL will change to 181.34. दैट वी हैव टू लुक, वो देखेंगे, वो भी वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग मैनुअल, एवरीथिंग इज हैपनिंग थ्रू Algo. वी कॉल इज ATS, ऑटोमेटिक ट्रेडिंग सिस्टम. तो इसके हिसाब से ही हो रहा. लेट्स चेक. देखिए और we have what do you say, LH भी आएंगे,
जो हमको टेलीग्राम चैनल में बताएगा। ट्रेड एग्जीक्यूट होते ही यस दिस ट्रेड हैज़ बीन टेकन एट दिस प्राइस एट दिस एंड एसएल भी बताएगा और अपना टारगेट भी बताएगा। फर्स्ट टारगेट हिट होते ही अपडेटेड मैसेज आएगा that we have hit the first target, we are moving to second target and SL has moved to cost price। अभी देखिए 1.87%। अभी देखिए 4% होने तक क्या होगा देखिए। देखिए यहाँ पे आ रहा है मैसेज दैट्स हाउ इट इज। हाँ देखिए अभी देखिए विल मूव टू 4% जाने के बाद वी हैव टू चेक वेदर आवर SL has moved to cost price which is 181.50। let's check that। आप सोचते होंगे सर इतना दे एक एक बार मोमेंटम जब है ना ट्रेड विल बी लाइक विद इन फिनिश विद इन सेकेंड्स और मिनट्स। इट नन ऑफ द ट्रेड्स इज अबव 10 to 15 मिनट्स। 15 मिनट से ज़्यादा कभी नहीं हुआ हम लोगों को। टू बी अराउंड लेस देन 10 मिनट्स ओनली। अभी देखिए हाँ राइट। अभी देखिए कॉस्ट प्राइस को आ गया SL बिकॉज वी हैव हिट आवर 4%। नाउ द target is second target is 8%। so let's see। अभी 188.7 into 1.04, so it's 196 will be our second target which is 8%। let's see if you go to that 196 के पास जाने के बाद और SL should move to 188। simple। let's see। okay हम लोग आ रहे हैं 8% तक आ रहे हैं। let's see what happens over here। अभी 8% तक जाने के बाद the SL should move to 188.76 or 50 whatever the calculated amount is, that is 4% के पास जाना चाहिए। and if you guys want to close the trade manually we can close the trade manually also। if you guys think yes we have got good amount we can close it, but we are we don't want to do that close trades manually। we want to have consistent profit for a period of time, so we are working on it। so now it has been stable for the last 6 months, we have checked it, it's very stable and we and don't think every day you'll get 2 3 trades like this, no no। on some days we don't get any trades at all। the most we got on any given day is as per our strategy and parameters whatever we have given, we hardly get 2 to 3 trades, not more than that। that too it can be combination of one SL 2 profits, 2 SL 1 profit, these things will happen। but देखिए 4% को मूव हो गया and it has gone to 8%, sorry actually अभी देखिए 4% को it moved right। now the next target is 10%। if the market goes to 10% then our SL will move to 8%। the trailing stop loss part is also done through coding only। so now when it देखिए अब 10 हिट हो गया। अभी देखो SL देखिए अभी it will move to देखिए it has moved to 196, it was around 191 right, it moved to 196। now if the market comes down to 8% it will close the trade or else next target is 12%। 12% जाएंगे तो SL will move to 10%। and trailing part can be customized according to our needs, we can do that। so we have fixed the strategy and we have fixed everything। ट्रेंड कैसा कैलकुलेट करेगा वो सब everything is done, everything is set। only thing we can make changes is stop loss and trailing stop loss profit percentage,
that you can tinker as and what you guys want to. Okay, now it is looking for next target, that is 12%. If it goes to 12%, then our SL will move to 10%. If not, if it comes down to 8%, it will close at 8%. It looks like we will be close at 8%. देखिए 8% पर we closed our trade. Everything is done through Algo. No human intervention in this. So we made a profit of 8% in this trade, right? So don't think रोज को मेरे को एक दो तीन ट्रेड आ जाएगा, सेम विल हैव प्रॉफिट्स एवरी डे. नो, it's market. So, and we don't assure that it's 100% correct. We can say 60 to 70% accuracy is there, and 30% we have to take a sell. That's how algo system is. No one is 100% accurate. So if we are making consistent profits for a period of time, that is good for us, right? In manual trading, what happens is we make profits for 5 days or 4 5 days or 1 week, but we lose everything in 1 day. That's what happens, right? Annually we will be in a good streak and we'll be winning a lot of money, and through overconfidence or whatever it is, we lose all the money that we got, including some part of capital, in 1 day. That's what happens to everyone. So those are the things we are trying to reduce through this system. In this system, you guys don't have to think, अरे where the market, कहाँ जा रहा मार्केट, कहाँ जा रहा है, यहाँ पे ट्रेड लेना नहीं लेना. मेरे को अरे बहुत देर होगा ट्रेड नहीं आया, आई एम नॉट टेकिंग एनी ट्रेड्स, दूसरे बंदे अपने प्रॉफिट्स दिखा रहे, आई हैव टू टेक सम ट्रेड्स. ऑल दीज थिंग्स we have removed from we have removed it actually. So you'll have mental peace, and we have spent a lot of time developing this. Okay, so please don't think that it's very easy algo. Or what's the difference between other algos and our algo system is, in our algo system we don't have to give any manual, you don't have to include whether you have to take CEP और कौन सा स्ट्राइक प्राइस पे लेना है, कितना कैपिटल डिप्लॉय करना है. दोज आर द थिंग्स वी आर नॉट मैनुअली, इसमें मैनुअली कुछ करने की ज़रूरत है. जस्ट एक थिंग है, आप सिस्टम स्टार्ट करो और टोकन रहेगा आपका एपीआई टोकन, वो एक टोकन चेंज करना पड़ेगा दिन में, बिकॉज नाउ द रूल्स हैव चेंज. सेबी का रूल्स चेंज हो गया. पहले इट यूज्ड टू बी 30 डेज का वैलिडिटी रहता था टोकन, एपीआई टोकन. नाउ इट इज ओनली 24 days, 24 hours. So हर एक दिन you have to change that token. Those are the two things you have to start, and you have to update the token. After that you hit the start button and it will take care, and our trades will be executed after 9:30 only. So the first 15 minutes we don't see any trades, because we don't want to वो क्या बोलते हैं रश जो रहता ना, स्टार्टिंग रश, we want to remove that. So we have said that our trade will start at 9:30. After 9:30 only we'll get trades, and we'll close our trade at 3 o'clock. 3 के बाद you'll not get. 3 o'clock जो भी आप ट्रेड में रहेंगे भी, तो आप एक ट्रेड में है, 3 बज गया, सिस्टम विल शट डाउन, सिस्टम विल क्लोज दैट ट्रेड एंड इट विल से 3 हो गया, system is shutting down, no more trades, it will not trade anything, it will run on the back end, it will show you what the trend is, everything, but trades will not be executed in your account after 3. So these are the things that we have included it. If you guys are interested to know more about it, you can give me a call on the number provided, or else you can chat with me on the whatever I've given my telegram link. You can DM me over there. Hope you guys enjoyed this video. इसके बाद मैं अपना एनालिसिस का वीडियो भी डालूंगा. ओके,
बाय फॉर नाउ, हैव ए गुड डे। और हम सॉरी, सब लोगों के लिए महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। ओके, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। ओके, फिर मिलते हैं और एक वीडियो में। बाय।